See, last lecture I told you about the curriculum, what curriculum that we have to learn. As well, I have given you your role, okay, as well as applications, okay, as well as some problems or some questions that may be in your mind that I told you, okay. Now we will cover first point related to unit 1, okay. Now you all are aware with binary number systems. So can you tell me how many numbers are present in binary number system? Two. Okay. Which one? 0 and 1. Very good. 0 and 1. Okay, these are the two numbers present in binary number system, right? So binary number system is adopted by the different digital devices. Okay, whatever the devices which you find in front of you, okay, all these devices will work over that, क्योंकि वह वही लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाते हैं. ओके, देखिए हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वह आइदर इंग्लिश है या आइदर हिंदी है या मराठी है. ओके, आप लोग मेरे से जो बात सुन रहे हो तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. अगर मैंने ऐसा कहा 1011110101, आप बोलोगे सर ये क्या है, राइट? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर विद दैट. ओके, only the machine, okay, the machine can able to understand, means laptop, your desktop, your mobile, whatever the digital fundamentals that can able to understand that language, okay, but others cannot able to understand 1010, right? So in the same fashion, we usually use the numbers, okay, in our day-to-day life, like 125, 119, okay, 10,000, 1 lakh, 20 lakh, ओके. ये नंबर्स अगर मैं आपको कहता हूं तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ओके. लेकिन अगर मैंने कहा F6 CBB I FCB CBA, अगर मैंने ऐसा नंबर कहा तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे? आपका आंसर रहेगा नहीं, because I told you in hexadecimal, right? So that's why this is another way of understanding of your binary numbers. Okay, so whenever any computer, any laptop will understand the data, then that may be either in binary or that may be either in a hexadecimal number system. Okay, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम दो प्रोमिनेंटली अडॉप्टेड लैंग्वेजेस है, या दो नंबर सिस्टम प्रोमिनेंटली अडॉप्टेड बाय द digital electronics fundamental or laptop or desktop, okay, or any machines can able to understand. Okay, yes, my voice is audible na? Yes beta, Yes, sir. yeah, okay. So these are the two way of understanding these numbers are adopted by the machines, okay. But in our day-to-day life we adopt a decimal numbers, okay. So I told you like 125, 119, okay. These are the numbers that are adopted by us, okay. Now just I'm sharing my slides and telling you something with that. See, I hope you can able to see my slides. Yes, sir. हाँ, रीड कर पा रहे हो ना बराबर? हाँ हाँ, आपको रीडिंग दिख रहा है कि जस्ट आपको स्लाइड ही दिख रहा है, रीडिंग कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है मैटर?
कि थोड़ा मैं आ सकते मैक्सिमाइज करो और नहीं सर आ रहा है नो सर। राइट ना? ओके ओके, वेरी गुड। जिनके पास मोबाइल है, जो मोबाइल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो तो उन्होंने स्क्रीन को थोड़ा खींचिए, तो शायद वो बराबर स्क्रीन में फिट आउट हो जाएगा और आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, अगर मोबाइल में अगर देख रहे होगे तो उनको स्क्रीन में थोड़ा बराबर एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। ओके, नाउ unit 1 that we are going to start today. Okay, so under this unit we are going all these points, okay, that I highlighted here, like representation of sign number, fixed floating point number, binary coded decimal, gray code, error detection, error correction, Hamming code, Boolean algebra, De Morgan's theorem, okay, and how you can represent or simplify the expressions, right? But don't worry, don't bother about it. I will tell you everything one by one. Okay, ज्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, मैं सभी बातें आपको क्लियर करता हूँ एक एक करके, हम सब बातें अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो धीरे धीरे मैं बेसिक से हाई एंड तक आपको लेकर जाता हूँ। ओके, सो सी, as we discuss binary, so that's why question is what is binary? Okay, so that's why binary is a number system, or it is a scheme of number that has two possible values, okay, for each digit, like zeros and one. Okay, the term is also describe a encoding and decoding system in which there are only two possible states. ओके, आगे फ्यूचर में आप एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी बातें लर्न कर पा रहे हो। ओके, तो आगे आपको फ्यूचर में जो भी करिकुलम या सब्जेक्ट्स आएंगे उनमें आपको ये एनकोडिंग, डिकोडिंग, या जब मैं आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपको वहां पर यूज ऑफ वन एंड जीरोस लगेगा, या आप कोई लूप अगर डिफाइन करते हो तो वहां कंडीशनल बिहेवियर जो आता है तो वह भी वन और जीरो के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ हाई और इफ वन द condition is true, if low or if zero the condition is false. Okay, in the same fashion we will term it in our programming language, right? So here the digital world is represented in binary. Okay, whatever the digital world nowadays, entire world is digital world. Okay, so everything is handled with the help of applications, okay, or your Arduino based apps. Okay, so all the Android based apps. Okay, so that's why digital world is represented in binary. Okay, but hexadecimal, which is compatible with binary and more easily understood by the people, so it is commonly used. But in our day-to-day life, our general people, means our all colleagues, okay, all friends, mother, father, as well as our grandfather, mother, okay, grandmothers also, or anywhere, okay, decimal number system is most prominently adopted because we all are aware with that system. Okay, so that's why machine will understand these languages, but our general communications will be done with the help of decimal number systems. Okay, so that's why these numbers are understood by the people very easily and it is commonly adopted. Now, in triple E also you might be learn about these things. Okay, when I talk about the binary, then binary has a base 2. Okay, hexadecimal has a base 16 and decimal number has base 10. Now question is, यहाँ बेस जो है वो बेस क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज, ओके, रिमेंबर, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम अगर मैं यहाँ पर बेस अगर कहता हूं तो बेस मीन्स टोटल 10. 10 is indicating here total 10 numbers are present from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, total 10 numbers आपके सामने
इस तरह डेसिमल नंबर आएगा, right? If I talk about the base 2 in binary, then I have two numbers. I like 0 and 1 are the two binary number. Getting my point? Similarly, if I talk about the hexadecimal number system, then there is a base 16. Means 0 to 9 numbers are 10 and A, B, C, D, E and F. All are total 16 numbers. Okay, so that's why the base is hexadecimal. Okay, so base is 16 and it is represented as hexadecimal number, right? Got? Okay, now one table I have given here. In that table I have given some examples, so that's why you can able to see and understand. There are total 3 columns are like decimal, binary and hexadecimal. Decimal telling you here 63. Immediately its equivalent is binary. Okay, binary means it is converted into the binary form. Okay, so like 0000, 0011 and 1111. Okay, this is a binary number. Okay, which is converted from decimal to binary, and its equivalent hex. Okay, और equivalent शायद ना हो, मैंने वहाँ just आपको वहाँ उस हिसाब से बोला है. Okay, so that's why yes, my dear. Please mute beta your mic so I can tell you. Okay, the hexadecimal numbers are 0, 3, F. Okay, so that's why here 0000 is represented as 0, 0011 is represented as 3, and 1111 is represented as F. I hope you got this row. Okay, if you got this row, it means you can able to understand the below's row also. Okay, whatever the row given at bottom side. Okay, 127, 255, 1023 and 4095. Okay, I think it will be not difficult much. Okay, not much difficult for you. Okay, so as exemplary point of view, I have given you these examples. Okay, now I'm going for the next one point. If you got this, if you have any doubt, you can ask me very freely. Okay. Now we come over our point. So here question is, what is signed and unsigned numbers? Okay. So that's why here we will see here the number. Okay, so as I already told you, decimal numbers we can represent as a 63. Okay, but if I write 63, then it has no sign. Okay, it has no any indicator that is plus or minus. Okay, below immediately there is a plus 63 and minus 63 is written. Okay, but the first one 63 is telling you here about the decimal number. Okay, this decimal number is unsigned one, means I say it has no sign. राइट मैंने उसको कोई साइन दिया नहीं है. साइन माने वहां पर प्लस या माइनस, बराबर है. तो प्लस अगर मैं कहता हूं तो वो पॉजिटिव नंबर कहता है, अगर वो माइनस है तो वो नेगेटिव नंबर कहता है. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दैट्स व्हाई हियर इफ रिमेंबर, इफ आई से प्लस 63 minus 63, then they are signed decimal number. Okay, if I say 63, then it is a unsigned decimal number. Got this point? Okay, I hope it will be very clear to you. Okay, now I am entering with the binaries.
Okay, I am entering with the binaries number because in terms of binary, it will be uh, a type of representation. Okay, it will be a type of sign magnitude number representation. Okay, in our computer system, when we define any data, then that data is represented with the help of sign magnitude representation form. It is a scientific form. It is defined by the different scientists, and this convention is completely adopted by the different designers, developers, okay, as well as our computer systems. Okay, so now I'm telling you about the unsigned numbers. I hope this point will be clear to you. So I am switching over the next point. So here just I am highlighting for you. Okay, so you can able to concentrate over this paragraph only. Okay, I am talking about the unsigned number. Okay, now here question is, which are unsigned number? Okay, how I represent the binary unsigned number, right? So the number which has no any sign, that number is called unsigned number. Okay, यानी जिन नंबर को मैं साइन पॉजिटिव या निगेटिव, जो मैं आपको पहले कहा वह साइन अप्लाई कर रहा हूं, वह अगर नंबर के साथ अगर नहीं होगा तो मैं उसे कह सकूंगा वह अनसाइन नंबर है. गॉट माय पॉइंट? नाउ क्वेश्चन इज, हम बाइनरी नंबर सिस्टम में प्लस या माइनस साइन कैसे लगा सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर पहले अनसाइन नंबर देख रहे हैं. सो दैट्स व्हाई रिमेंबर, इन टर्म्स ऑफ अनसाइन नंबर देयर इज नो साइन, देयर इज नो साइन present with a number. So that's why here whatever example is given to you here, like 1101100, this number has total 7 bits. If you count it, total कितने bits है वहां? 110 110, टोटल 6 हो गए और एक लास्ट में और एक 0 है, तो कुल मिलाकर 7 बिट्स हुए. तो ये 7 बिट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ मैग्नीट्यूड. ओके, तो यहाँ मैग्नीट्यूड यानी जो वहां उसकी वैल्यू है, ध्यान में लो, मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू है वह रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो इस तरह के नंबर्स में रिमेंबर, अगर हम कोई बाइनरी नंबर अगर देते हैं तो बाइनरी नंबर देते समय हम यहाँ ग्रुप करते हैं आइदर 4 का या आइदर 8 का. अगर मैंने 4 का ग्रुप किया तो उसमें 3 बिट रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और 4th बिट रिप्रेजेंट करेगा साइन. अगर मैंने 8 बिट अगर यूज किए तो 8 बिट में टोटल 7 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और 8 बिट रिप्रेजेंट करता है साइन. गॉट माय पॉइंट? ओके, मैं उसे फिर से आपको सामने स्लाइड्स में भी बता रहा हूं. जो सेंटेंस मैंने आपको कहा वह आपको यहाँ फिर से शो आउट करता हूं. तो अभी आपके पास यहाँ नंबर है 1100. Okay, so this number I am saying it is a unsigned number, right? Now I am saying it has no any sign. Okay, so that's why here this is a unsigned number because it has total 7 bits. Okay, but when I talk about the binary number, remember in terms of binary number, in terms of complete binary number,
there are total 8 bits. But now here representations point of view, here the data showing point of view, total 7, only 7 bits are shown. So that's why these 7 bits are representing the magnitude. Got my point? Okay. So now we will understand how I do representation of unsigned binary number. See, so here the bits that I present in the unsigned binary number will hold the magnitude of a number. That means if the unsigned binary number contain n bits, then all n bits present the magnitude of number, since it doesn't have any sign bits. Getting my point? Okay, समझ में आया सबको? Definition, point, okay. Now एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूं आपको, तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ वह जो नंबर है 11011011, यह डेसिमल फॉर्म में बताया है. इट इज अ 108 नंबर. सो कंसीडर द डेसिमल नंबर 108. So the binary equivalent of this number is 110110. This is the representation of the unsigned binary number. अभी शायद एखादे किसी को क्वेश्चन होगा, सर आई डोंट नो अबाउट हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी. So everything I have given in the slide, okay, you just see and understand. Okay, so in front of you I have given how to convert the decimal number into the binary one. Okay, so that's why we adopt here the binary conversion process from decimal to binary. So that's why here the power of binary number is considered with their bits. So that's why the number is organized like 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, and 2 raised to 7. Okay, so that's why here 2 raised to 0 का जो पावर रहेगा वह रहेगा 1. Okay, but here we are going to multiply with a 0. Okay, that I already did the conversion of binary decimal to binary. So that's why 0 is multiplied with 1. So that's why it represents 0. Similarly, 2 raised to 1 is representing 2. So that's why this 2 is multiplied with 0. You will get 0 in the bottom, right? Similarly, 2 raised to 2 is 4. So that's why 4 is multiplied with 1 and it will give you a 4. Okay, so that's why here, okay. Similarly, Similarly, 2 raised to 3 is nothing but 8. Okay, so that's why 2 raised to 3 is nothing but 8. 8 is multiplied with 1. You will get a result 8. Okay. Similarly, 2 raised to 4 is 16 is multiplied with 0. Okay, so that's why it is 0. Okay. Then next is 2 raised to 5 is 32. 32 is multiplied with 1 is represented as 32. And last 2 raised to 6 is nothing but 64 is multiplied with 1 is 64. If you plug all these things, okay, you will get 108. Okay, right? Getting everyone? So that's why this is a way of understanding our binary bits, and you can convert it into the decimal to binary. Okay,
So this is the direct method that I have shown you, but there is a division method. Okay, but as first year point of view, you might learn about the dividing method. Okay, by 2. Okay, so that's why this method may be adopted by you, right? Now, lastly, I have given you the answer 108 out of bracket 10 is written. It represents a decimal number and is equal to, again in round bracket, 110 is represented with 2. It indicates a binary number. Okay, so that's why here this entire number has total 7 bits, and these 7 bits are representing magnitude of number. Okay, so keep it in mind, in terms of unsigned binary number, there are total 7 bits are present. If I talk about the 4 bit, then only 3 bits will be there. If I talk about the 16 bit, then there are 15 bits are represented, right? So keep it in mind. अगर मैं मैक्सिमम बिट्स की तरफ अगर जाता हूं, तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं 4 बिट के लिए जाता हूं तो 3 बिट रिप्रेजेंट किए जाएंगे मैग्नीट्यूड के लिए। अगर मैं 8 बिट के लिए जाता हूं तो 7 ही बिट रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अगर मैं 16 बिट के लिए जाता हूं तो 15 ही बिट रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, so this is the way of representation of unsigned binary number. I hope you got the point, right? Now, second point that I am going to tell you here about the sign number. Sign number contain both sign as well as magnitude. Okay, in the bottom side there is one diagram that I shown you. 43 plus 43 is represented. So that's why that plus 43 is written in binary form. Okay, so that's why here along with the 7 bits, 8 bit is present. Okay, along with the 7 bit, okay, 8 bit is present. That 8 bit is indicating a sign, and remaining 7 bits are telling you here the magnitude. I hope अभी आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। इसे कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो अनसाइन में साइन नहीं था, साइन नंबर्स में साइन प्रेजेंट है, तो वो साइन कैसे इंडिकेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस नंबर। बट नाउ आपके सामने तो प्लस भी नहीं दिखाई दे रहा, माइनस भी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? क्वेश्चन इज सम क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन में कम्स इन माइंड, सर आपने प्लस भी नहीं बताया, माइनस भी नहीं बताया, और आप बता रहे हो साइन है। सी, साइन in terms of binary is represented by 0 and 1. Getting my point? Keep it in mind. Okay, जब हम साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं in terms of binary, तो प्लस या माइनस का प्रयोग वहां नहीं किया जाता है, वहां पर 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 इंडिकेट पॉजिटिव बाइनरी नंबर एंड 1 इंडिकेट निगेटिव नंबर। समझ में आया सबको? फिर से दोहराता हूं, अगर हम बाइनरी नंबर में हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में यहाँ 8 जो बीट है या 4th जो बीट रहेगा या 16th नंबर का जो बीट रहेगा वह इंडिकेट करेगा आपको साइन। रिमेंबर, मैं फिर से सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर दोहरा रहा हूं। अगर आपके पास 4 बीट का बाइनरी नंबर है तो 3 नंबर, पहले 3 बिट्स क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड, और जो 4th बिट है वो क्या डिफाइन करेगा? साइन। अगर 8 बिट है आपके पास तो 7 बिट क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड, और जो 8 बिट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइन। बट अभी क्वेश्चन, सर साइन के लिए क्या यूज करेंगे? आंसर इज, मैंने ऑलरेडी कहा, 0 के लिए हम यहाँ पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 के द्वारा, और 1 रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 यूज किया जाता है निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी अगर आपने ऐसा नंबर रीड किया, मैं हाईलाइट कर रहा हूं नंबर, ओके, तो हाईलाइट करूंगा तो देखिए, अगर आपको हो गए 111010101 तो ये नंबर के पहले अगर प्रीसीडेड 0 बिट है
तो प्रीसीडेड 0 बिट को कहेंगे साइन, और ये साइन 0, ये साइन यहाँ पर बता रहा है, ये जो बिट है ये बता रहा है 0, तो 0 यानी पॉजिटिव नंबर। ओके, और उसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है वह नंबर यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहा है 1110101, लेकिन प्रीसीडेड बिट है 1, वो इंडिकेट कर रहा है आपको निगेटिव नंबर। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, आपको समझ में आया? गेटिंग एवरीवन? अभी आपको यहाँ पर मैं एक सीरीज शो आउट कर रहा हूं। ओके, सीरीज शो कर रहा हूं। सी, इस सीरीज में आपको यहाँ पर नंबर शो आउट करता। ओके, सो सी, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर कहता हूं, ओके, सो दैट्स व्हाई ओके, what I written positive number series for 8 bit. ओके, यानी 8 बिट है। मैंने कल आपको सीरीज भी बताई। ओके, कल पहले लेक्चर में आपको बताया भाई 8 बिट नंबर है, सो दैट्स व्हाई 2⁸8। ओके, सो दैट्स व्हाई 2⁸8। ओके, सो दैट्स व्हाई 8 बिट यहाँ पर स्टार्ट होंगे 00H टू नियर अबाउट FFH, राइट। पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसमें से मैं कंप्लीट सीरीज बता रहा हूं, तो कंप्लीट सीरीज आएगी 00 से लेकर FFH तक। तो यह नंबर्स में आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएंगे। ओके, पॉजिटिव नंबर आएंगे यहाँ 00, ओके, H से लेकर 7FH तक। Okay, question is, sir, why only this? Because if I represent this number in terms of binary, so that's why they are represented as 00000000 as a binary. Similarly, 01H is represented as 000000001. Okay. Similarly, 02H is represented as 0000010. Getting everyone? And last number that I say that will be represented as 0, then 0000, okay, 0000. Okay, sorry. 01111111. Okay, so here what I said, okay, here all these numbers, okay, all these numbers, if I separate, okay, if I separate from 0, okay, so that's why here all these numbers are saying me a positive number. Okay, तो ये मेरे positive number रहेंगे. Okay, got my point? Similarly, Sir, what is H there? हाँ बोल हाँ, H काय sir? H is a way of representing a hexadecimal number. Okay, Yes. H यानी हम इसे हेक्साडेसिमल नंबर में लिखे बेटा. ओके, सो दैट्स व्हाई 00H to FFH. ओके, गॉट इट? Yes, sir. Okay, okay, and again if I talk about the negative numbers, okay, if I talk about the negative numbers are starting from 80H, okay, and ending up to FFH. Okay, so if I say how these numbers are negative, because here the starting is from 1, okay, and in earlier number starting is from 0. Okay, now here 80 if I write 100000000. Okay,
सिमिलरली इफ आई राइट 81H, ओके, मैं इसका इक्विवेलेंट बता रहा हूँ। ये 81H का इक्विवेलेंट रहेगा 10000001। गेटिंग एवरीवन, सभी को? ओके, उसी तरह यहाँ पर जो FF है, तो FF का बाइनरी इक्विवेलेंट रहेगा 11111111। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं, वह नंबर्स में जो 1 आया है वह रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव नंबर। ओके, आई होप एवरीवन इज गॉट दिस। सभी को समझ में आया? अभी कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स रहे हैं मेरे पास। ओके, मैं जस्ट अटेंडेंस आपका कॉपी कर सकता हूं उस पीरियड में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। Hello, sir.